I didn't find it. क्या बात? Yesterday, मेरे पास notice जब आया, तभी मैंने कहा, everyone should know कि this may happen. Either of the four options you have to follow. If you don't follow, Yes. unless there is a contract with the contrary, if it's a works contract service, there are rules that permit it. उसमें तो हमने उसका निकाला कि क्या कहाँ से हम उसको सेव कर सकते हैं, बट ये चीज़ें ये निकाले तो you have to actually be aware that this can come up, and this is very important for chartered accountant services. हम नहीं बनाते, that's very very risky point. Interest के वजह से हम अपना invoice नहीं रेज करते, हम normally रेज करते हैं पेमेंट आने पे, ये प्रैक्टिकल है। क्यों? क्योंकि आज अगर हम रेज कर देंगे तो हमारे को पेमेंट अभी by default within 30 days you must supposed to do. उसमें करना है। आज section 12 में rule नहीं है, that's a mandatory. Like yield mandatory, does not be penalty. No clients have to know क्या करना है invoicing का. तो ये you can only do when you spend. वरना client क्या कर रहा है आपको क्या पता? अगर मेरे ऐसे client होगा, I will file a case against you. Why did you not guide me? You were my counsel. आपकी ड्यूटी थी, आपने बताए, आप हमारी डरने मर रहे थे। नहीं, आपने बता दिया, वो तो दिल्ली में बता चुके हो, मतलब एक्चुअली बता चुके हैं, ये रूल्स हैं, आपको ऐसे करना है। अकाउंटेंट्स चेंज, उनकी भी अगर अपने चीज़ें अभी नहीं किया था, हम जस्ट करेंगे, ये भी एक पॉइंट आ गया, आ गया, मतलब आ गया, कहाँ पर आ गया, आ ही जाएगा। Good morning to all of you. We start. What is the concept of HSN? We are not going to give a lecture on HSN, but you should know. HSN is a codification of all the products that are manufactured and sold in the world. There is an organization called World Customs House in Brussels, Europe. Their only job is to continue to know what are the new goods, services or both being offered in the world. All kind of goods and all kind of services, including dating services. This paper report. But in our country, it's still a taboo. You know, have a membership of a dating app. But if you see Priyanka Chopra, she makes millions of dollars every year from this dating app. So HSN, full form, Harmonized System of Nomenclature. This has 99 chapters. In our country, the one chapter is more because the tobacco, ये जलेबियाँ, जलेबियाँ बाहर कहीं नहीं बनती, तो हमारे यहाँ बनती. So we have some additional points in our HSN course. 99 chapters. They have sub-chapters. They have main headings. They have sub-headings, and then within all those headings, they have various products classifications. Each chapter is given by name. कि उसका इस chapter में क्या चीज है? For example, we say auto parts, components, accessories. All these things are mentioned in those chapters. That you have to find out a chapter, कौन से chapter में है. For example, we say railway parts, 8607. We say relays, electric relays, 8503. So once you open that chapter, you find so many things. जब आप अपने रेट नोटिफिकेशन पढ़ते हैं, उस पर लिखा होता है चैप्टर सो एंड सो ऑल गुड्स एट सो एंड सो रेट्स, राइट? दैट इज अगर एक चैप्टर के पूरे चैप्टर को आपके रेट चार्ट में कवर कर दिया गया तो वो सारे गुड्स उसी रेट पे हैं जो अभी हो, नॉट विथ स्टैंडिंग व्हाट पर्पस दीज आर मेंट फॉर. ए जनरल बिलीफ इज दिस, राइट? अब हाउ डू वी सी इट? once you read an entry, इस HSN कोड का ये टैक्स रेट, आपको HSN कोड पे जाना है. कई बार हमारे रेट नोटिफिकेशन में लिखा है HSN और सोवर नंबर एक्सेप्ट द फॉलोइंग. तो जो उस रेट में एक्सेप्टेंस ग्रेड की गई हैं वो आपके HSN कोड में यूनिवर्सली कवर नहीं है. बैट में थी फॉर एग्जांपल वी गेट एंट्री 140, एंट्री 41A. वी फॉट केसेस इंक्लूडिंग मी, जो कंप्यूटर पेरिफेरल्स हैं ये क्या है? इट्स एन आईटी प्रोडक्ट और अनक्लासिफाइड प्रोडक्ट. ये प्रोडक्ट आईटीसी 5%, अनक्लासिफाइड 12.5. इतना ज्यादा रेट का फर्क हो जाता है. तो एज गुड प्रोफेशनल्स वी हैव टू नो कि व्हाट इज दिस हार्मोनाइज्ड सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर, इसको कैसे देखते हैं. इसके 3-4 रूल्स हैं. वी कैन नॉट डिस्कस द रूल्स, इट्स अ वेरी लॉन्ग डिस्कशन.
दिस इज रूल 3(1)(a)(b)(c) कि किस तरह से किस सीक्वेंस में आपने उन प्रोडक्ट्स को पढ़ना है, कि कैसे रूल अप्लाई करके आप उसको देखेंगे क्या ये इस चैप्टर की कवर होती है ये आइटम या नहीं होती. फॉर एग्जाम्पल वी राइट पार्ट, कंपोनेंट, एक्सेसरीज. इन तीनों के मतलब अलग है. अगर कई एंट्री में पार्ट्स आर टैक्सेबल 5% of a particular product, then only parts are 5%, not component or accessory. There was a case of Nokia which went from Punjab Act to Supreme Court on this SSN classification. They say जो telephone charger है, which is packed in a telephone box, the rate should be same as the mobile phone, that is 5%. Like Rasik said, कि झारखंड के ऑफिसर ने सेक्शन 12 का पॉइंट निकाल दिया, उसने भी पॉइंट निकाला. कहता ये क्या मतलब है, ये तो कुछ नहीं है, कंपोनेंट ऑफ फोन. उनकी एंट्री था कंपोनेंट एंड पार्ट्स, नॉट एक्सेसरीज, जो पंजाब बैठ की एंट्री थी. अल्टीमेटली केस वेंट टू सुप्रीम कोर्ट. कहते कहाँ लिखा है कि चार्जर के बिना फोन नहीं बिकता. चार्जर नॉट नेसेसरी टू सेल अ फोन. वी आर डीलिंग विद an entry that deals with sales of goods. They said no, this is not 5%, 12.5%. Right? It was simply based on interpretation. What is component, accessories, parts? A component is basically that goes into the manufacturing of a basic product. For example, mobile phone, गाड़ियाँ. IT chips is a component. IT chip के बिना गाड़ी नहीं बन सकती. That controls all the entire car, that's the brain of the car. What is component? Component is that connects various parts, and that we call component. Accessory is that raises the efficacy, that makes the product more efficient, that is called accessories. For example, car seat covers, not car seats. Car seat covers have been held by Supreme Court. They are accessories, not component parts of the car. They are taxable at a higher rate. So, how do we know it? So, unless you know what is component, what is part, what is accessory, you cannot decide the correct tax rate to be applied. Like we were saying yesterday, if we say you have paid short tax, interest will relate back to the due date. So, अगर आपने किसी चीज को 5% लगा दिया और वो चीज 12.5% थी, because you did not go into this SSN interpretation or the judgments or whatever materials we may have had, then you are in trouble. Tomorrow after 4 years, if they detect that you applied the wrong tax rate, then for example, I tell you supari. supari खाते हैं सारे. और supari तो various kinds. supari पान में भी बिकती. supari लोग ऐसे भी खाते हैं. supari is also used as a medicinal herb. supari scented भी है. सुपारी शेक भी मिलते हैं दूध में डालकर, साथ में बहुत मिलता है. So what is the function of this supari? So Supreme Court says as long as the product is sold in the same shape as it is and the buyers buy this as supari, rate tax rate doesn't change. आप उसको शहद में लिपटा दो, आप उसको scented कर दो, as long as this remains a piece of supari, it remains same. It should be sold as supari. That is also based on HSN. If you do not know that supari is 5%, you will say it's 18%. क्योंकि इसमें आपने दूध लगा दिया, इसमें शहद लगा दिया, आपने सेंटेड कर दिया, it changes the product. Supposing you give this opinion to somebody and somebody follows the opinion, he's sunk, he's finished. He will charge 18%, but he will charge 5%. Who will buy from him? Therefore, as chartered accountants, as lawyers, it's also important for us to know कि जो हमारा client deal करता है, उस पे आपको रिसर्च करना है. रिसर्च कि उसको वो चीज बनाता है जो वो बेचता है. If it's a good client, it's an important client, it's a category client, you must continue research without charging, so that at after a time you can guide him. कि भाई ये जो बना रहे हो ना, इसकी ये प्रॉब्लम है. That comes when you know how to interpret SSN entry. कुछ SSN में क्या कवर होता है. For example, few days back I gave you a judgment of Westinghouse
West of sex mine versus state of West Bengal. It was one of my cases where we had given opinion earlier. A person was supplying auto parts, railway parts to railways, Varanasi. 30-40 crore रुपए जिसकी सेल थी, suddenly he gets a showcase notice. You are supplying at 5%, it is 28%. Obviously, anybody will get a shock of his life. 5.5%, and interest 18% and section 74. सब झगड़े पड़ गए. So he came with his CF, who was a chartered accountant, and he's a friend of mine. I know him very well. So I have not opened my office in Kanapke, so I have very garden में थे हम लोग. So he go I. So very agitated man, the owner of the company, very agitated. कि how can they do it? ये क्या समझते हैं? मैं कि जो अपने आप को अफसर है, आप इनको धरती पे जो हाईकोर्ट चले जाओ. है कि आप प्रॉब्लम क्या है सर? वाई इज एजिटेटेड? कहता सर हमको 4 दिन से हमारी कंपनी बनता है, ये जोगर नोटिस आया. मतलब नोटिस ही है, डिमांड तो नहीं है. देखते हैं. तो आई स्पोक टू द चार्टर्ड अकाउंटेंट एंड जो कंपनी सेक्रेटरी था उनका, कहता सर नोटिफिकेशन है 5%. हाँ मुझे भी कुछ याद है, पर आई डोंट नो. याद तो है मुझे कुछ था. कहता सर 5% है, पूरी दुनिया कर रही है. मैं कहता पूरी दुनिया क्या, इट्स नॉट माय बिजनेस. आपने क्या किया वो बताइए. आप सारी इंडस्ट्री आपकी क्या करती है? वी हैव नो ब्रीफ ऑफ योर इंडस्ट्री. या तो नहीं सर आप पढ़ लो 5% है. मैंने तो ऐसे ही पूछा, मैं कि आपने पढ़ा है वो नोटिफिकेशन? इट्स अ लेसन फॉर ऑल ऑफ अस. I said, did you read the notification or did you go by what industry does? She was quite paranoid. You have not read the notification. So when I opened the notification on my computer and made him read those 4 lines, I could see his face going pale. The notification said only parts covered by HSN chapter 8607 are 5%. So a notification giving benefits has to be strictly construed. You have to strictly satisfy the conditions of notification before you get released. So I could see his face. I said, did you read the notification? I got angry with him. I said, you can't work like this in a company. आप बोलो मैंने पढ़ा है, मैं आपको बोलना आपने नहीं पढ़ा. मुझे आता नोटिफिकेशन. तो जो उनका साथ अंडी साहब, उसको क्या बोल सकता था मेरे साथ? क्या कहता है, यू आर इन ट्रबल. There's nothing anybody can do here. Because what you make is relays for railways, and which are not covered by 8607. Right? But I told him, as a lawyer tells me sell hope. I said, I will take time. I know this person जिसने आपको issue किया. We will take time and file a 200-page reply. Delay the matter. Something can happen tomorrow. ये कौन सा अभी बहुत साल है, इनको बहुत टाइम है इनके पास. अभी 17-18 का था, अभी बहुत टाइम था उनके पास. Anyway, we took our money or whatever, and we drafted it and filed it, telling him that you have no case. इस पे आपका केस नहीं. In between, since he was a good client, a judgment gave us Supreme Court in Westinghouse case. There they interpreted HSN rules, all the sub-rules of Rule 3. They said the interpretation given by Calcutta High Court is incorrect. He said if a particular product is manufactured covered by a particular HSN code and that product can be used there only, then notwithstanding whether the product falls in that chapter or not, it shall be deemed to be a part of that chapter. And relays were this, they were being manufactured only for railways. They were acting as master controller for railway engines to apply brakes. When this came, I examined it again, 2-3 days, we understood it, and they called it. कहते सर क्या हो गया? मैं तो आगे कोई प्रॉब्लम है. So he came alone. I told him, don't bring your CA. So I, if I save you, what do you give me? Jokingly, कहता सर blank check, please write. He actually gave me a check. And it was saved for. I gave the check back to him. After 2 days, he came with his son, with an MBA from Brown University. अच्छा लड़का था, पढ़ा लिखा था. कहते सर हुआ क्या? मैं कहा जजमेंट है ना which favors us, but this is not under GST, but this is under customs. So, कहते is it relevant? मैं कहा yes. So what is the principle? Since HSN is not a part of GST,
HSN codes are not a part of GST, they are part of customs or excise. So if Supreme Court interprets any entry of HSN in customs, whether in excise or customs, this is equally applicable to GST. For what? For the classification of that product. So what is this product? Is this covered by this chapter or not? So I told him we'll file a supplementary reply to show cause notice. We'll have to prepare it. Tell the jokers, ये judgment आप पे binding है. So we did some research and filed a detailed reply. And I met Sanjay Jain, who had just come to DGI RKपुरम, commissioner. मुझे जानता था सर्विस टैक्स के जमाने से. कहता है क्या करना है सुशील इसका, मैं क्या पढ़ लो. You have to drop your show cause notice. It is Supreme Court. So we can't drop my drop. Cash is yours. Take my reply on record. So he laughed. कहते क्या कर रहे हैं? Send it for legal opinion, sir. Like I will not come to you again after this. You can do whatever you want to do. Please do. तो 2-3 महीने बाद उसका फोन आया कि legal opinion has come. I went there. He showed me the legal opinion, running into many pages. उन लोगों ने बहुत कुछ लिखा था उसके ऊपर. Then finally said, yes, Supreme Court is binding. So what happens now? We gave an opinion that we understood at the time when they came first. And our opinion was correct. At that time, when investing of judgment came, in fact, after I made a video on this judgment has shocked the entire country. हमारे तो low rate में था. Supposing इनका auto parts higher category में चलेगा. Auto industry मर गए. तो कैसे दो? But there is Supreme Court interpretation. So once you do give an opinion which you think is you have labored hard to give an opinion on classification or interpretation of an entry based on HSN, keep following it. And that you will do when you study. Update yourself. अगर आपको सब्जेक्ट के साथ प्यार नहीं है तो आपको ये सब्जेक्ट नहीं पढ़ना है. आगे प्लान. अगर आपको जिंदगी में रिटर्नें भरनी है तो डोंट वेस्ट योर टाइम अटेंडिंग दिस क्लासेस. You have to rise above it and give an interpretation to whatever you are doing. It's a simple thing. आपका पब्लिक 10 क्लाइंट है जो आपके मेन क्लाइंट है. You don't need work to do it. Do it yourself. उनको देखो क्या बनाते हैं ये कौन से HSN में बिल बनाते हैं. बिल तो HSN लिखा होता है ना बिल में. उस HSN को पढ़ो जिसपे ये क्या है. Is it correct? You do 6-7 cases like this, you will understand how to read HSN. I'm not asking you to interpret. आपको यही देखना है कि क्या HSN कोड आपको देखना आता है. I'm sure आता आप तक आपने किसी ने HSN कोड नहीं देखा. बहुत मोटी किताब है. 6,000 रुपए की किताब आती है. ओरिजिनल किताब मिलती नहीं है. तब हमारे यहाँ लोगों ने कॉपी करके लगाई हुई. But if you go to World Custom Brussels House, you can download this book free, which is the best thing. You can go further. पूरे यूरोप में HSN की इंटरप्रिटेशन Daily European Commission gives rulings on HSN entries. Follow them. तो आपको किसी क्लाइंट की जरूरत नहीं इसको पढ़ने के लिए. You simply pick up your client, spend 1 hour or 2 hours or 1 day or 2 days कि ये बंदा काम क्या करते हैं. For example, रस्सी के क्लाइंट हायर करते हैं, जैसे बस प्रोडक्ट सर्विस ज़्यादा में I understand. अब तो समझ नहीं बस वाली सर्विस कौन से HSN में आती है. हमको पता है 9907. पर 9907 को और क्या आता है. If it's a lower rate than the normal rate, then you must examine, can my client also receive rate? That is the value addition you do to your client's business. That's how it gives you money. For example, insolvency line. पढ़ा है किसी ने आज तक? This is a collateral law which all tax lawyers must know. It's a must. For example, a company goes into insolvency. There is Section 8 proceedings before NCLT. They issue a notice. Once they issue a notice, all demands are extinguished. It's all over. Nobody can recover anything from your client. No tax, not income tax, not sales tax, not GST. Everything is over. You have to make the claim in NCLT. No arrest, no recovery, nothing can be done. It's such an important law. ये जो collateral laws भी आपको साथ पढ़ने हैं. अच्छे से आपको पढ़ना ही. अगर आपको लिटिगेशन में जाना है, आपको ओपिनियन देनी है, एडवाइजरी करनी है, तो आपको HSN पढ़ना है. आज जाके देखो किताब तो आपके पास नहीं होगी किसी के पास. डाउनलोड इट, गूगल इट. गूगल में सब कुछ मिलता है आपको. जो तुम्हारे क्लाइंट ने लिखा, फॉर एग्जाम्पल 8529 व्हाटएवर कोड यू हैव रिटन,
जो तुम्हारे ये कैटेगरी क्लाइंट्स है उनको एग्जामिन करो कि 852 में क्या है। अब पता है वो फर्नीचर बेचता है, कुछ भी करता है, और ये इतना बड़ा कोड है, कम से कम 200-300 आइटम है उसमें और क्या है। सपोजिंग आपके 10 क्लाइंट्स हैं और ऑल हैव डिफरेंट HSN कोड्स। इफ यू स्पेंड 15 days you have come to know 10 HSN codes। 10 चीजें आपको फ्री में सीखने को मिल गई। You can always use it in your practice day-to-day basis। So HSN code classifications are very critical, especially when you apply to show cause notices where the tax rates are higher। How will you say these are not higher? आप बोलोगे नहीं हमारे पास परचेज बिल भी इस रेट के है, सारी इंडस्ट्री ऐसे करती है, दिस इज ऑल बकवास, इट हैज नो कनेक्शन इन लॉ। यू हैव टू एग्जामिन कि हाउ डू यू क्लेम कि दिस टैक्स इज नॉट ए हायर रेट बट एट ए लोअर रेट, एंड दैट इज HSN। उसके ऊपर आपका जजमेंट मिल सकती है किसी भी लॉ में। सपोजिंग सुपारी हम कहते हैं कि हमने सुपारी तोड़ के बेची है, उसके एक सुपारी के 20 हिस्से करके बेचा है ताकि वो जो मुसलमान खाते हैं वो सारा दिन चबाते रहे। You have to find, does it remain supari or does it change? जो सुपारी दवाइयों में यूज किया जाती है फॉर योर स्टमक एलिमेंट, सुपारी इज अ वेरी गुड थिंग। When it goes as a raw material to medicinal purposes, change its character। ये सारी आप जब पढ़ेंगे आपको पता चलेगा कि it remains supari। Because it is sold as a supari। How did you eat? What used to put it? What used to put supari to? That's the material। When I am selling, I am supplying a supari। आप उसके क्या करते हैं? None of my business। So when you examine your clients and bring on table, whenever you have time, I'm sure all of us have free times also, or you find time to examine कि वो आपका client क्या करता है। आपको लगा कि उसमें आपको लगेगा बहुत गलतियाँ हैं। सिमिलर सर्विसेज के बहुत सारे कोड हैं, HSN का कोड है। तो जो जजमेंट्स आपको HSN कोर्ट में जो भी आपका रिपोर्ट होती है, जो आपके मैगजीन में आती है, जो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में आती है, स्पेंड 2 minutes स्टडी क्या है। आज जो हम चैप्टर कर रहे हैं, अभी मैं लेटेस्ट लाइक बॉम्बे हाई कोर्ट की आज सुबह जजमेंट आई वाज रीडिंग इट। एलिगेशन लगाया जी इसके बाद 21 फेक फॉर्म है और ये बंदा कोई सामान नहीं खरीदता बेचता नहीं, बिल सप्लाई करता है विदाउट डिलीवरी ऑफ गुड्स। एंड हाई कोर्ट दे ब्रॉट एविडेंस इन सपोर्ट ऑफ दिस। Bombay High Court petition was for anticipatory bail, pre-arrest bail। High Court said you must be in custody। Without your custody, this fraud cannot be unearthed। So therefore, once you examine 16(2), the goods should have been physically received। So before you start writing replies, whatever knowledge we have, all of us, that knowledge must be applied, and we should see whether the goods or services were actually received or not। Then tell your client that you have a case or you don't have a case। If you think it doesn't have a case, refuse this case because you can't help it। Simply because they want to make some money out of the case, that is not being a good professional। You can't cheat people। Our profession is not to cheat and fleece people। Our profession is to give good advice to people। Money will follow you। Once people come to know that you are a good lawyer, you don't cheat people, money will follow you। This is my experience। You don't have to follow money, money will follow you। Work hard। Even if you have stupid kind of questions in your mind, raise them। हम जब MBA करते थे, हमारे को पहला जब लेक्चर हुआ था ब्रेनस्टॉर्मिंग, हमें पता नहीं था क्या होता है। कहते जो बकवास करनी करो, you are free। But out of the brainstorming sessions also lot of the good things come। Fall in love with this subject, you will learn। We start section 132। We are going to finish 132, 69, 67 and 70। This is the only academics left which I was supposed to do for you। Section 132 is a self-contained code. It has no corresponding rules at all। So whatever is here, it's here। You don't have to put any rule, any form or nothing। It's just here। The marginal heading is punishment for certain offenses। Whoever commits। Now here is not a person
There is no registered taxable person, no taxable person, whoever and anybody, whoever commits this amendment, they have now enhanced the scope of this provision by adding the word whoever. कोई भी हो, whoever commits or causes to commit. So what does it mean? Whoever commits means once you are doing this activity for the first time, when you become a principal accused in criminal language, and who or causes to commit, जो करते हैं उनको बर्खास्त करने के लिए. Supposing I am a company, I want input tax credit, fake input tax credit, to offset my output tax liability. I tell my 10 employees, you create firms and raise bills on me. No goods, nothing. So what is doing? Whoever commits, who are committing? These employees are committing offense. Who's causing to commit? Mr. Verma. So both are subject to punishment under section 132. So not only the principal accused, even the collateral accused, who are beneficiaries of this kind of an offense, they also get covered under section 132. So whoever commits or causes to commit and retain the benefits. The word is and. Causes to commit and retain the benefit, that input tax invoices that come from this 10 fake firms, I retain the benefit because I use this input, avail and utilize it activity, offset my output tax liability. So whosoever commits or causes to commit and retain the benefits arising out of it. When we say the word and retain, there has to be allegation without a proof, of course, in the show cause notice or a charge sheet, whatever they do. Yes, this guy also retained the benefit. How does they prove? I have put this input tax credit in my 3B. The word is retain, not utilized. Retain. So whenever you want take input tax credit in your books of accounts or in your 3B returns or whatever returns are, this means you have become a beneficiary of that amount. You may never use it, but you have retained. जो आपके पास इनवाइस है, आपको पता था फेक थे, आपके अपने एम्प्लॉइज थे, वो जो शेल कंपनीज आपका सीएस काम करते हैं, वो शेल कंपनीज यही होती हैं. You are the employers make shell company employees commit offenses and they retain the benefit by siphoning off crores of cash from those companies. So they must allocate, retain the benefit of any of the following offenses, namely any of the following offenses. So if you commit any of these offenses, there is a punishment, right? The first is supplies. So what is supply? Section 7. Supply for a consideration. That is, you must physically supply goods or services. Only then supply happens. Simply if you are holding stock, there is no supply. Supply will presuppose 2 or more persons. One person cannot make a sale to himself, right? But in this case, it's possible. For example, you buy raw material or fake invoices, you use it. That is also a supply, right? You are using in your own company. Somebody has sold you goods, you have kept it, you have supplied. So there is a concept called self-consumption that is also deemed to be a part of supply. Supply any goods or services or both. So this provision applies to all goods, services or both without issue of any invoice in violation of the provision of this act or the rules made thereunder with the intention to evade tax. Supposing section 67 search is carried out in your business premises. You declare a closing stock of 10 crores. Physically they find 8 crores. So what could be the clear intention? 2 crores you sold without invoice. And you will have no explanation. When we talk of invoice, it means invoice, section 31 invoice. No delivery tran, no delivery memo, they are not invoices. You can't charge tax on them.
Therefore, invoice means the based on which you get reimbursement of your supply price from the recipient. That is the meaning of invoice, subject to requirements of section 31. So if you supply, that is, you part possession of goods or services or both in favor of somebody else for a consideration, for a deemed consideration, I will say in this case, there is no consideration, and you do not issue an invoice. This is the most serious offence, and it is very easy to make out. Because if there is a difference between your physical stock and your closing stock, it's very clear you are indulging in supplying goods without invoice, still unless you have a proper explanation. So whenever there is a fire in your business premises, your client's business premises, or the stocks are lost, embezzlement, chori, bori, you must report to the police and take the stocks by journal entry out of the saleable stock. Keep it wherever you want to keep in your books, but it should not be a part of your saleable stock. Suppose किसी के गोडाउन में आग लगी, 10 करोड़ का स्टॉक था, 5 करोड़ का स्टॉक जल गया, इनपुट टैक्स रिवर्सल हुआ, अलग चीज है. I'm talking of this particular issue. अचानक आपके रेड हुई, आपकी किताबें कहती हैं 10 करोड़, वहां 5 करोड़, क्या बोलेंगे आप? सर 6 महीने पहले आग लगी थी, हमारे पास ये प्रूफ है. नो, you have to take that stock out of your saleable or good stock and transfer to suspend account, और जो भी आपको करना है statutory requirements के लिए. CS will know better, I don't know about it, but this must be done, and we get it done in our client's business. आपको प्रॉब्लम है, आपकी चोरी हुई है, आपका कुछ टूट गया है, आपका कुछ खराब हो गया, आपका कुछ ऑब्सोलीट हो गया है, it is not a part of saleable stock. It must be lying in dump yard somewhere. Transfer it, ताकि जो आपका क्लोजिंग स्टॉक वहां पड़ा है, that must tally with your book stock. Even if you destroy the stock, दवाइयाँ destroy करते हैं लोग, लेकर लोग destroy करते हैं, because they have time bar. जूसेस, करोड़ों रुपए के जूसेस destroy होते हैं इस कंट्री में, डाबर वाले करते हैं. They take it out of saleable stock. जो भी उसकी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की फॉर्मेलिटी जब आपको पूरी करनी है. फॉर एग्जांपल, यू वांट टू टेक आउट stock worth 1 crore from saleable to non-saleable, or a dump, or defective, or whatever. I think that you have to form some opinion, some committee has to be formed to sign that these can be taken out. Have that evidence on record. Then say that these stocks have been taken out, the line here you can see it. But once they find that the variation, a large variation, normally these people say if the variation is more than 5%, there is a clear case you are supplying goods without invoicing. 5% तक मानते हैं. Then at the same time, you should also know the closing stock is valued at market price or cost price, whichever is lower. So before they value the stock at the your list prices, tell them that मेरा closing stock available stock नहीं, मैंने बेच नहीं रहा इसको. It has to be done at cost price or market. That will also reduce your variation considerably. अगर आप नहीं करते हैं, then this will not lie in your mouth in Bombay High Court or any court or tribunal or कि जी इन्होंने गलत किया. Done before you know. Then it again becomes a debatable fact. Okay, what is the correct price? No court will go into it. They don't go into facts. आपको उसी टाइम बताना है, सर ये रूल है, बड़े क्लाइंट के पास होना चाहिए, ये रूल है जी, मार्केट प्राइस कॉस्ट प्राइस, सुप्रीम कोर्ट कहता है whichever is lower, that's why you value closing stock. और मेरा GP और expenses 30% है. If my stock is 100 rupees, you're valuing it 130. It will never tally with my book stock. Possible नहीं है. So you have to make this request at that particular time when they are searching you. So the first offence is if you supply goods, services or both without issuance of invoice and with intention to evade tax. Now this intention to evade tax is a phrase which is without any basis. बेलगाम का घोड़ा है. If they find 2 crore variation, the intention is clear. If you want to evade tax, you have no explanation for this goods. What if the person is doing business in exempted goods? Then evasion of tax is not there in this kind of a GST. Why it is not there? How do you say that what goods are not there, they were exempted goods? जो आपके goods कम है, जो आपके supposing somebody rates your godown. Yeah. We done a registration section, but use of section 10 proper obstacle and fiscal liability. तो आप क्या रेट करते हैं? आप कहते हैं कि हम तो गेहूं में डील करते हैं. कितना स्टॉक आउट है इधर? You can check. There is no bar. Checking is there. So the word is whosoever commits. So whether you are registered person, unregistered person, tax free, whatever you are doing, that's the meaning of this phrase whoever. इसका और कोई मतलब नहीं है.
अब आपके 2 करोड़ का स्टॉक का फर्क है, आपको हम तो गेहूं है पैसे एग्जम्प्टेड है, वो गेहूं भी तो होना who will चाहिए prove कहीं it? पे। Who will prove it? That is you are subject to investigation. इनकम टैक्स की चोरी हुई वो तो हुई है। नहीं इनकम टैक्स छोड़ो, मैं जीएसटी की बात कर रहा हूँ। आपका 2 करोड़ का स्टॉक क्या था? आप कहते परचेज बिल ऐसे इररिलेवेंट, कहाँ गया स्टॉक बताइए? फिजिकली तो कहीं ना कहीं होना चाहिए। आप बोले कि बैंक मेरा तो गेहूं सिर्फ गेहूं बेचता हूँ, क्यों? आप चीनी नहीं बेच सकते क्या? आप दालें नहीं बेच सकते क्या? No record. Somebody has to investigate, Narasik. That is right. Some, if you prove it's okay, but the offence has been committed. Because that is the, you raised a very good question. I was about to come to that and in second part. Whosoever needs this, whichever goods you are dealing, whichever service you are offering, then supposing I'm a law firm, I'm supposed to charge forward tax. Not being a usual lawyer. मेरे बैंक में हम लेते हैं जी आपके पैन में 1 करोड़ रुपए आया साल का, आपने बिल किया 25 लाख का रेट, तो क्या मतलब है इसका? इधर ऐसे मेरे को लोन लिया, मैंने रसीद पकड़ के 75 लाख रुपए, अब I have no tax free services, so this will not tie your mark. मेरे purchase bills have no meaning in GST, mostly fake है। जिसने 2 करोड़ का बिना बिल के स्टॉक बेचा उसका सारा कुछ फेक होगा। All these are collateral evidence in support of what you are stating. But first you have to prove that what is not there was गेहूं only. उसका पैसा कहाँ गया? So in investigation your conduct is more important than your books. इसका मतलब आप कैश में बेचा रहा, किताबों में पैसे नहीं है ना वो। Your conduct is bad. They will investigate. You might win, but it doesn't mean that they will leave you. They cannot leave you. Sir, intention to evade tax और जो ये wrongful availment of credit है वो तो आया ही नहीं ना गेम के लिए। इसमें कि wrongful availment लिखा है? सर जो ये A2K है उसमें जो हम पढ़ रहे हैं उसमें availment लिखा है? ऊपर ही है ना, ऊपर ही है। You can't jump. These are independent offences. So once you cloud your mind with the additional phrases, you will get defocused on this. इसमें सिर्फ इतना ही मतलब है. He has to only prove you have intention to evade tax. कहाँ है 2 करोड़ का स्टॉक बताओ ना? प्रोडक्ट तो मेरा 0 रेटेड है ना। कैसे पता आपको? कैसे पता? Who knows? क्या बेचा आपने? Intention is a subjective satisfaction of the tax officer. It's not objectivity we is dealing with. He's not dealing with your books of accounts. इसे क्या माल बेचा आपका? हम तो गेहूं बेचते हैं, आप किसी से पता कर लो. Why should you go? You prove. The only intention is you are subject to investigation. So my phrase is only this: you cannot say हम goods पे tax free है, तुम्हारे को आप नहीं कर सकते हैं वो. There is no bar. Second is issues any invoice. So the English is issues, not has issued. It is a present indefinite tense they are using in this line. सारे में present tense है, इसमें कहीं past tense नहीं है. Issues any invoice or bill without supply of goods or services or both in violation of so and so, leading to wrongful availment or utilization input tax credit or refund of tax. Wrongful availment is here, not in first part. How do you say? Supposing they raid ABC company, वो कहते हैं हमारे यहाँ तो कभी बिना नैस के माल जाता ही नहीं. Let us say they raid a jeweler. That's a specific example. वो पूछेंगे जी आप क्या करते हैं? सर हम ट्रेडिंग करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग नहीं करते. तो मेरे स्टेटमेंट, आपके स्टैंडर्ड स्टेटमेंट, कहते बिल आओ. वो बिल देखते हैं कि एक बिल 50 लाख का, उसमें लिखा है डायमंड बैंगल सोल्ड. टैक्स लगा है. सोल्ड टू व्हाट? B2B ट्रांजैक्शन. डायमंड बैंगल बिल आओ. Don't have the bill, then what do? You have issued invoice without supply of goods. क्योंकि वो goods आपने कभी खरीदे ही नहीं. That is what investigation follows. और सारे केसों में यही होता है. और सपोजिंग ये एक स्पेसिफिक चीज है जहां कोई आप कुछ कर नहीं सकते. That is by issuing this invoice
you did not supply goods, that is the diamond bangles, but you allowed the recipient to take input tax credit based on this tax invoice. Therefore, you are in trouble, big trouble. Let's take one more example. आपके पास डायमंड बैंगल का बिल है 50 लाख रुपए, कहते कहाँ से लिया था आपने? ये सर वो रसीद मकरम कंपनी से लिया था। ओके, उनका टिन नंबर है, ठीक है, वो अपना कंप्यूटर खोलते टिन नंबर देखते हैं, उसके आगे सारे रेड फ्लैग हैं, ये बंदा बिल्कुल ही चोर है, चार्टर्ड अकाउंटेंट भी चोर भी है। तो नहीं, वो नहीं यार, यू कांट डू इट, तुम्हारे में गट्स नहीं है ये काम करने के, नहीं गट्स नहीं है तुम्हारे में, ऐसे जो कर रहा हूँ, हमारे बारे में और बतेरे जो करते हैं, तुम्हारे में गट्स नहीं है। कहते हैं यार ये यू नो रसिक पक्का, हाँ सर हमारा अकाउंटेंट डील करता है उनसे, बुलाओ अकाउंटेंट को। अब रसिक मक्कर साहब को जानते हैं? नहीं सर वो फोन पे बात होती है, मैंने देखा तो कभी नहीं। अच्छा पेमेंट कैसे करते हैं? सर उनका लड़का आता है वो चेक ले जाते हैं। So all these circumstantial evidence convinces them that this is a bogus bill. Now if your purchase bill is bogus, जो इनका केस है सारा, and which is correct, they are right. Any fraud that is found, it taints all other collateral transactions with illegality. अब जब आपका परचेज सोर्स डाउट हो गया, क्योंकि यू कुड नॉट गिव एनी, आपने किसी को 50 लाख रुपए पता ही नहीं किसको दिया आपने, जो नराना मंडी में होता है लोहे वाले करते हैं, सारे एजेंट स्क्रैप बेचते हैं, जो तो सब यही होता है वहाँ। दैट्स व्हाई ऑल ऑफ देम आर इन ट्रबल, इतने लोग अरेस्ट हो चुके हैं वहाँ पर। मेरे पास आते हैं, मतलब मैं क्या करूँगा बताओ, फैक्ट्स को मैं लॉ के बढ़ सकता हूँ, यहाँ से कर दूँ, तुमने बोला स्टेटमेंट है तुम्हारी। सो दिस अनदर केस वे दे फाइंड आउट कि आपके पास जो इनपुट टैक्स क्रेडिट आया था और जो आपने दिया था, आपने अवेल भी गलत किया, और यू आल्सो पास्ड ए wrongful input tax credit to the recipient. So in both counts you are covered in sub clause B of section 132 subsection 1. Let's take one more example. आप कहते हैं जी ये माल तो हमारी सिस्टर कंपनी से है, कहाँ की सिस्टर कंपनी सर? नेक्स्ट डोर फैक्ट्री। तो बिल है ना आपके पास, जो सेक्शन 15 में रेडिस पार्टी का कंसेप्ट है वो यही लागू होता है। वो कहते हैं वो पहले इसको ये स्टॉक लेदर में एंट्री नहीं है उसकी, बुक्स देखें सर भी बिल नहीं बनाया, बिल बनाना है, माल तो भेजा है सर हमने, पर हमारी अपनी कंपनी बिल बनाना, हमारे पास सेक्शन 12 का टाइम है। दैट्स नॉनसेंस। You have supplied the goods, you are supposed to make invoice. That's another case where circumstantial evidence suggests that you have issued an invoice for wrongful availment of ITC by the recipient. In Evidence Act, there is a section called Section 6. If you find time, read it. It deals with the theory of res gestae. It's a Latin term, theory of res gestae. It means in order to prove an offense, circumstantial evidence is very relevant. जो पिक्चरों में देखते हो, मर्डर हुआ था, कहाँ थे? वो क्यों पूछ रहे कहाँ थे? तुमने के लेने कहाँ था वो? उनको शक है कि बंदा वहाँ था, तो झूठ बोलेगा, पकड़ा जाएगा। That is called theory of res gestae, where the circumstantial evidence suggests that what is being talked about you is correct. Supposing a husband goes late, आप कहाँ थे? अरे यार वो रसिक के पास उसने बैठा था, वो रसिक को फोन कर लेती है, मेरे हस्बैंड साहब कहते हो भाई हमारे बस में कभी आया ही नहीं आज तक, और हो गया प्रॉब्लम शुरू हो गई कि भाई झूठ बोला तूने मेरे साथ। So second is where you issue any invoice, goods or supplies to help somebody to obey. Now if you correlate with this opening sentence, whosoever commits, so who has committed? Who had issued such invoices, or causes to commit, other people who receive the goods, दोनों इसमें कवर होते हैं, both can be arrested. On the entire chain can be arrested as is being done. That is why the court gives no relief. क्योंकि जो फैक्ट्स उनके सामने जाते हैं कोर्ट में, वो कहते हैं कि बहुत सीरियस एलिगेशन है, विदाउट कस्टोडियल कस्टडी दे कैन नॉट बी अनअर्स्टेड, ये चिट्ठी बाजी तक कुछ नहीं होना चाहिए था। If somebody challenged this law, ये कस्टमर भी था, एक्साइज में भी सेम लॉ, but now it's being implemented. Come to third one. Avails input tax credit using the invoice or bill referred in clause B or
fraudulently avails impotent without an invoice or bill. Here the word is only avails, not utilized. So availment and utilization is only in relation to interest. There is no amendment in any other section. आपको interest अभी लगेगा when you availed in the return and utilized it also. But 73, 74, 83 and this 132.1 continue to use, distinguish the use word only avails. So what is avail? Section 16 entitles you to claim input tax credit. तो वो condition satisfy करें आप में entitlement है. When you put this in 3B, you have availed it. When you have used this money to pay your taxes as per section 49 subsection 5, you have utilized it. That is the distinction between entitlement, availment and utilization. We use the word avail, that means जब आपने 3B में रख दिया कोई input tax credit और वो fraudulent था और गलत था with reference to subclause B, this is also an offense. अब आप कह सकते हैं सर गलती हो गई हमने यूज होना किया. What we call the taxable event for the arrest event in this case is the factum of you have when you availed in your 3B. It is now intention आ गई. हाँ आगे चलते हैं avail करती intention is there. Absolutely, you're right, absolutely. अब if you read subclause C, it is different from subclause A. It doesn't have intention to avail. So they have to prove nothing. That's the way you read law. Because all these are independent clauses and there is no word or. Once or is not there, we say they are independent. There is no intention, it only says avails input tax credit using the invoice or bill referred to in clause B. So what is clause B? He has got the invoice without receipt of goods or services or both. Or fraudulently avails input tax credit without any invoice or bill. अब इनवाइस नहीं है उसके पास. जैसे कल हुआ सिद्धार्थ लुथरा के साथ सुप्रीम कोर्ट में, I don't know whether you read that. नहीं, रोहित रंजन जो जी न्यूज का एंकर था जिसने राहुल गांधी का वीडियो चलाया था, which was fake, 100% fake. And there are around 23 FIRs done by Congress in various states, and the FIRs being pursued because that's definitely a fake news, and it impacted Rahul Gandhi's image. Siddharth Rupla, senior advocate who charges around 25 lakh rupees per hearing. I want to write a comment on Facebook, but I didn't write. He appears before bench of Justice Gupta and Indrani Banerjee, open court में कि ये हो रहा है जी, I request कि all affairs should be transferred here. And the bench issued a notice. Here comes the registrar कि petition तो फाइल ही नहीं हुआ. The petition was not filed by AOR, and this guy comes to make money and make statement कर दो. And the Indrani Banerjee issued notice. Yes, we can discuss this. So what happens? You made a statement which was fraudulent, जिसका कोई basis ही नहीं था. आप senior वकील को पता ही नहीं आप क्या कर रहे थे. AR को बुलाया, उन्होंने उसको ढांटा, and today at the hearing they said we will take very strong action on this issue. I won't be surprised Mr. Siddharth Rupla is banned in practice today for a few months. This is a very serious offence. You go to Supreme Court, create a sensation, and court says agree. वो कहते हैं जी petition कहाँ है? हमारे पास तो फाइल ही नहीं है. अपील तो फाइल ही नहीं हुई, रिलीफ मांगने आ गए आप. So is the case here when you say or fraudulently. How did they hear without a file? Senior advocate में statement देते हैं, दे देते हैं, ऐसा होता है. But petitions are followed, no? ये और कहते हैं मैं The file is already. तुमने अखबार नहीं पढ़ते? Without file, how can they decide that? अखबार पढ़ो तुम्हारे होश उड़ जाएंगे. नहीं ये तो होश उड़ने वाली बात है. Otherwise, normally I have never seen in the Supreme Court anybody taking up a case He apologized to without court, a file. and Indrani Banerjee said it's not a question of apology. And mostly the judges come read. They read the files. Only then they. File है ही नहीं. So that's a very strange thing on the judge's part itself. पैसे मिल गए होंगे. Face value good. Face value good. This is So if you claim ITC fraudulently without invoice, that is before you put ITC claim in 3B, you must have tax invoice. As I'm telling you, आप जो 2B पे बेस पे लेते हो, that is wrong. That is all fraud.
उसका उसका लॉ में किसी तरह का कोई बेसिस नहीं है. The only function of the 2B is it allows you to adjust your tax liabilities against input tax. इसका और कोई किसी तरह का कोई प्रूफ नहीं है कि आपको इनपुट टैक्स ठीक आपका. ये ठीक होता तो इन ऑफेंस की कोई जरूरत ही नहीं है. सर्कुलर रेंज में सारे प्रूफ है. फ्रॉड के केस में तो कभी कोई गलती मिलती नहीं. 100%. पेमेंट, बैंक, डिलीवरी, चलान, ईबे, बिल्स, ऑल लॉ सब कुछ देंगे वो आपको. But even then they say कि we arrest you. Because these, when you say punishment or offenses, these are only allegations. Once the allegations are serious, then they need to be investigated. That is why the courts they hesitate to give bail under such serious cases. कि allegation बहुत बड़े हैं आपके सामने. फेक हो, गलत हो, जो मर्जी हो, but court में allegations हैं. Next D. जैसे क्लाइंट डाटा हमारे पास आता है कि हम रिटर्न फाइल करते हैं, फाइल करते हैं उसके डाटा के बेसिस पे, तो क्या इसमें फॉलो करते हैं सॉरी टू कमिट हमने बोगस इनवॉइस के उसके बेसिस पे जितने सीए अरेस्ट हुए क्यों हुए? उसी फ्रेज में हुए, इसी फ्रेज में अरेस्ट हुए हैं. जैसे हमने So their role was fixed. But for you, these claims would not have been made. पहले वो क्लाइंट की स्टेटमेंट रिकॉर्ड करते हैं. वो कहते हैं जी हमारे तो सारे काम सीए करते हैं, उन्होंने बिल लिए हैं सारे. बिल हमने डाटा रिटर्न फाइल करने के लिए No, then it's not a case. पार्टी देती है सर, बिल तो पार्टी देती है ना. I tell you, day for yesterday, one CA came to me. His name is Rahul Yadav. He is from Rohini. I don't know who lives in Rohini. He has a good practice, I am told. तो मुझे फोन आया जो मेरा आपकी किसी ने रेफर किया ना, मेरे पास आया, पेपर लाया, कहते हैं हमने एक किसी की फर्म बनाई थी APS एंटरप्राइजेस, ही वाज ए मुस्लिम, एंड हमने 5-6 महीने की रिटर्न भरी, उनको हमने छोड़ दिया था. वो उसकी ईमेल यूज कर रहा था. ईमेल पे आपको OTP आते हैं. 4 साल से बंदे को रिटर्नों के OTP आ रहे थे. He did not object. They arrested him. मतलब you are using somebody, you are making somebody use your digital records, email और फोन. आपको OTP आते हैं, आप उसको रोकते नहीं कि आप मत करो. लेकिन ये क्यों किया आपने? कहता सर हम तो सारे क्लाइंटों को देते. This is a suicide. You have no business to give your emails to your client. You should not file returns. That is not your job. If you file returns, you suffer. आप रिटर्न क्यों फाइल करते हैं क्लाइंट की? गिव मी एनी गुड रीजन. व्हाई डोंट यू यूज हिज साइट? अपनी मेल क्यों यूज करते हैं? मेल्स में क्लाइंट की हम तो मेल्स लेते हैं. आप रिटर्न में खुद भरते हो ना अपने कंप्यूटर से, क्यों भरते हैं आप? और ऑप्शन भी तो कैसे क्यों ऑप्शन नहीं? क्लाइंट क्यों ऑप्शन नहीं? डिजिटल है, डिजिटल है, भरो उसको. उसका मोबाइल दो, उसकी ईमेल दो. मेल सब ठीक किया. In that case, I don't think they arrest chartered accountants on this score. इस स्कोर पे नहीं करते. जो चार्टर्ड अकाउंटेंट पकड़े गए हैं, मैंने कुछ काफी केसेस पढ़े हैं, वो एलिगेशन सीरियस है. एक वो TDS वाला था, गुड़गांव वाला, हमारे पास भी आया था. वो उसने फ्रॉड TDS सर्टिफिकेट लगा दी. ये तो बहुत कॉमन केसेस है. Whenever you are going for easy money, it will go through their door. Today, tomorrow, Trouble follows. eh? Trouble follows. Consequences shall follow. You want to remain clean, do a clean job. But in case we retain client at an office, do we need to take Why are you keeping it? He's not your client. Throw it out. हमने क्यों रखा? बताओ मेरे को, क्या रीजन आपको रखना है? इससे पैसे नहीं मिलते आपको. It is not evidence against him for anything. Throw it out. क्लाइंट का केस हो गया, उसकी फाइल छोड़ दो, भेज दो आप. क्या उसकी फाइल क्यों रखते हैं? normally sir we retain the DSC of the client. Why? चलो. नहीं, आपका क्लाइंट अभी चल रहा है. लेकिन क्लाइंट चला गया तो उसका तो वापस करो भैया, तेरी फाइल ले लो. नो बात. So do we need to take a declaration or something from them if we are retaining the DSC? If you are not confident in a client, then you should. I always tell wherever I don't like to return, मैंने कभी देखी नहीं रिटर्न आज तक. So I have never seen a GST return in my life. On the safer side, Second, safer side is whatever figures are given to you, send him a mail. Let him acknowledge that these are the figures given by you, and we have test checked, they seem okay, we are filing returns accordingly. So that tomorrow you can say, sir, I didn't file return. He approved it. 2 लाइन में लिखने में कोई नुकसान नहीं होता. तो जो हो रहा है हम हमारे प्रोफेशनल इस कंट्री में,
तो कहीं ना कहीं तो कोलेटरल एविडेंस आपके पास होनी भी चाहिए कि हमने क्या किया। वो रखोगे तो इसका कोई नुकसान नहीं। डी, collects any amount as tax but fails to pay the same to the government beyond a period of 3 months from the date on which such payment becomes due. You don't file return for 4 months. Your RC is rejected. You file all the returns, it's automatically revocation. But will it delete this offense? No. You're still liable to remain for arrest. They may not. Because this section is not subject to any other section. 132 is neither subject to any rules nor subject to any section. It's a self-contained code. So simply says मैं सारी रिटर्न भर दी सर, टैक्स जमा करा दिया, no. Offense was committed when you collected tax. Collection means what? Not in cash. You raise the bill. You are supposed to have collected tax, and you did not deposit it with the government treasury for 3 months. This can be a defense in court of law. Yeah, it's already done. I have done. I have paid with interest. Court may give you reply, but you cannot say कि वो आप revocation हो गया तो मेरे 132(1) भी खत्म हो गया. No, it is not subject to that at all. इसमें कोई defense है नहीं. So we have to be very careful कि जहाँ बड़ा टैक्स है, किसी बड़ी कंपनी टैक्स ने दिया 6 महीने बाद दिया, you should tell him कि सर this provision stands, be careful. अब TDS में जमा कराते हो, कंपल्शन में क्यों जाते हो आप? जब आपको वारंट आता है इनकम टैक्स में, क्यों? जमा तो करा दिया ना, आपने लेट जमा कराया. But she said no, arrest them. You are keeping government money. So there are similes to this effect when you read such laws. किस laws के लिए consequences? So D is this. एक ही offense के लिए different sections में penalty Why लगती not? है। फिर इसके बाद ये सेक्टर में है. सिर्फ यह है जहाँ सिर्फ लिखा है 129 या 70 से 74 की केस लग गया, वहाँ पेनल्टी नहीं लग सकती. तो wherever they say कि the penalty cannot be imposed unless established, they are mentioned. बाकी में तो कोई बात नहीं. हमारे ट्रिब्यूनल में जाओ, वो 25 पेनल्टी कंफर्म कर देगा. आप जाके देखो और 25 पेज का ऑर्डर भी लिखेगा. And we will say this order is correct. E, evades taxes or fraudulently obtains refund and where such offence is not covered by clauses A to D. This is as good as A to D, but this language is more imperative than the earlier four. Evades taxes. ये इन्होंने 21 में amendment की थी. Evades. That is, there has to be a tangible evidence on record for the authorities to say that you have evaded tax. Evade tax or fraudulently obtains refund. जो आप दिल्ली में रिफंड लेते हो पैसे देके, most of them can be highly objectionable refunds. Especially export सेल में रिफंड दिए गए, कुछ फाइलें मेरे को दिखाई थी किसी कमिश्नर ने, they were incorrect files. The refunds should not have been given. I told them they cannot be given. क्या point था? बहुत सारे points. Example. टैक्स इनवॉइस फेक थे. और सुनो, जो एक्सपोर्ट दिया, जो एक्सपोर्ट बिल था और जो शिपिंग में पैकिंग लिस्ट थी, वो आइटम में फर्क था. और जो इंस्पेक्टर वहां लोड करता है कंटेनर में, जो आपको वेरिफिकेशन रिपोर्ट देता है, वो रिपोर्ट नहीं. व्हाट मोर, ये तीन चीजें मैंने देखी थी. पहले एक्सपोर्ट पे and they have written to custom commissioner, this is new commissioner. I want this report. आपके लोगों ने कैसे export certificate दिया? See, again, you are getting money from a government exchequer. ये जो सब चीज़ है ना, ये as a CA और as a consultant जो जाते हैं वहाँ पर डॉक्यूमेंट के लिए, तो यही कहते हैं ये डॉक्यूमेंट्स हैं, आप ऑफिस में पेश करते हैं. Because 99% we are not aware कि उससे बैक उसने कस्टम में क्या फ्रॉड कर दिया उसने. We are not aware of it. उसने भी अपना गुड़गांव वाले सीए ने यही कहा था कोर्ट में. अब वही बात जब मैंने पुनीत के बारे में लिखा था, दिस इज बैडली आर्ग्यूड मैटर, यही बोला गया. दिस इज मी टू आर्गुमेंट. ये सब करेंगे. Once you are filing a refund application with the knowledge these documents are forged, there is a difference between knowledge and evidence. Knowledge is you knew it. अब आपको प्रूव करने का आपको नॉलेज नहीं थी. एलिगेशन है क्या?
उसकी थर्ड में रिजेक्ट हुई है वो इसी कारण हुई है, उसको पता था वो डॉक्यूमेंट फोन है। अगर यही बैठ के किसी सीए ने देखा होता बिफोर फाइल द सीम, आई डोंट डू रिफंड, तो मुझे इतना आता भी नहीं रिफंड के बारे में इन टर्म्स ऑफ प्रोसीजर, तो ये तो देखना चाहिए था, इससे पैसे नहीं आते, रिश्वत भी खाई होगी, फीस भी ली होगी, 5% में 3% खुद भी रखा होगा, इतना काम तो करना चाहिए था। टैक्स चेक तो कर सकते थे। सर 99% चार्टर को पता होता है कि एडवोकेट को कि क्लाइंट ऑनेस्ट है कि नहीं। एक और देखो, अनंत वाड़ी में कोई फाइल, आई एम कोटिंग अनंत वाड़ी, he showed me a file where they were export of services. You know what the service? Packing consultancy service. और एक फंड था 7.5 करोड़ रुपए का एक साल। मेरे को उन्होंने बुलाया, दोस्त है मेरा, आई डोंट डू एनी वर्क विद हिम। कहते क्या है? मैं सर्विस दे दो, देना चाहिए रिफंड आपको। आई विल से नो, ऐसे डॉक्यूमेंट तो देख लो, मैं तो दिखाओ, शो मी डॉक्यूमेंट। मैं कह ठीक है, कोई एचएसएन कोड नहीं था, पैकिंग कंसल्ट सर्विस टू ए लिस्टेड कंपनी इन अमेरिका। बोले जी कोई वीडियो कॉन्फ्रेंस नहीं कर रहा था पैकिंग कंसल्टेंसी के लिए, इन्होंने विजिट कराई, उसका एड्रेस था खारी बोपले का, कुछ 4th फ्लोर पे 100 स्क्वायर फीट का कोई ऑफिस था, वो नीचे का कभी खुला नहीं। वो जो पार्टनर थे उस फर्म में, वो दोनों 10th क्वालिफाइड थे। आई एम नॉट सेइंग कि 10th qualified cannot become a consultant. There's no qualification for a consultant. But the whole collateral evidence was this. This was 100% bogus. Payment आई हुई थी फॉरेन करेंसी में, अब तो फंड बनता नहीं। And then rejected. He did not file appeal. I followed up this case. संजीव मुझे के बाद अपील जानी थी, didn't file. अनंत वाली उसको बोल दिया था, next time you are in jail. You claim that bogus. कभी तो अपील नहीं करी, वार्निंग हो देना। Yes. अब my idea है वो जिसने भी केस, I know the person who did this case, हमारी बार का मेंबर है, उसने मेरे से बात भी की थी। Like I didn't know your case, मेरे को तो पेपर दिखाए गए थे। I do teach department, where is the doubt? अरे बोगस था, तो मैंने बोला बोगस। आप सबका बोलते हो, मैं क्या सबको, मैं सबको बोल दूंगा, मेरे पास बाप के लिए जा रहे हैं, तुमने पैसे कमाए, मेरे को तो ना पैसे नहीं आते। अब ये चीज तो आप देख सकते हो ना, 13 बिल थे सिर्फ, 13 बिल्स, वो 13 बिल भी उस बंदे ने नहीं देखे। बिकॉज एक्सपोर्ट और सर्विस आर नॉट टेंजिबल, दे आर इंटेंजिबल ऑनलाइन। कोई एचएसएन कोड नहीं था, पूरा बिल गलत था। पैकिंग कंसल्टेंसी इट्स नॉट पॉसिबल टिल यू आर देयर फिजिकली कि हाउ टू पैक द गुड्स। तो वो सारा कुछ हॉट पॉट था, बेसिकली हवाला ट्रांजैक्शन थी। एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस में हवाला इज ओमनी प्रेजेंट। लॉयड के केस में बहुत सारी सर्विसेज बोगस है। मेरे पास किसी लॉ फर्म का केस है, उनको बोल सकते हैं ये सारी हमारा बोगस है। मैं तुम्हें सारे कॉन्ट्रैक्ट बनाने का अमेरिका में कोई आपको $20 दे देंगे, वहां तो कॉन्ट्रैक्ट की किताबें बिकती हैं, जब मर्जी कॉपी करके बना लो। तो $20 से वेरी कॉम्प्लिकेटेड। मैं तो 3 पेज का कॉन्ट्रैक्ट कॉम्प्लिकेटेड। But I'm doing a case because it's a legal issue, but I can tell you, unlikely. अच्छा बंदा पढ़ेगा तो नहीं देगा। This way you have to learn it. Next, F. Falsifies or substitutes financial records or produces fake accounts or documents or furnishes any false information with an intention to evade tax or payment of tax due under this act. Of this due under this act is only in this clause. ऊपर if you go to surplus bond, due under this act नहीं है. There is a remarkable change in interpretation when you read these clauses. Surplus bond में under this act नहीं है, इसमें under this act. ये तुम्हारा गेहूं वाला केस है। वही मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पे तो It is state away, no? कि you have falsified your accounts. आपकी इनकम टैक्स में बैलेंस शीट हो रहा है, बैंक के पास कुछ हो रहा है, तुम्हारे घर में कुछ हो रहा है, तो व्हाट आर यू डूइंग? दैट्स व्हाई इनकम टैक्स, सुप्रीम कोर्ट सेड इनकम टैक्स बैलेंस शीट इज द बेसिस फॉर टैक्सिंग यू। यू कांट से कि मन में लोन ले लेकर बनाई, ऐसे आपके फेक इनवॉइसेस हैं। फॉर एग्जांपल ई इनवॉइस यू कैन नॉट अमेंड, दैट्स द लॉ, यू अमेंड इन योर बुक्स ऑफ अकाउंट्स, यू आर फॉल्सिफाइंग अकाउंट्स। अब बड़े कंपनी हम देखते हैं, जैसे वी आर डूइंग ए लीगल ऑडिट इन कंपनी, उन्होंने बिलों पे चेंज कर दिया।
किसी का बिल 10 लाख का है, 2 लाख का माल हमने 2 लाख में 8 लाख ओरिजिनल बिल पे अमेंडमेंट कर दी। लेकिन ये क्या किया, कहता है जी वो 2 लाख का माल खराब था। मैं कहा यार वो कोई कानून है, आपने खुद ही कर दी, इनपुट टैक्स पूरा ले लिया। दिस इज falsification and this is very clear, this you did with an intention to evade tax due under this act. That is, the first sub clause is much bigger than this clause. That the intention to evade tax. So even if you, I'll go to that extent, even if you trying to evade collateral taxes, this is ground for arrest. जैसे आपने बोला इनकम टैक्स की चोरी है, intention to evade tax तो है, but tax is not defined in this act. If you go to Delhi VAT Act, इसमें tax defined है. Go to Delhi Sales Tax Act, वहाँ tax defined है. Tax payable under this act. इसमें tax defined, tax की definition नहीं है. Next. Obstructs or prevents any officer in discharge of his duties under this act. राज बब्बर को 26 साल के बाद 2 साल की कैद हुई आज, कल. क्या ऑफेंस था? इलेक्शन टाइम में उसने किसी पुलिस ऑफिसर को धक्का दे दिया वोटिंग के चक्कर में. दिस इज द ऑफेंस कि यू ऑब्स्ट्रक्टेड ए पुलिस ऑफिसर फ्रॉम परफॉर्मिंग हिज ड्यूटी. इलेक्शन ऑफिसर को किया था कुछ ऐसे था? नहीं, वो इलेक्शन ऑफिसर पहला था, उसके साथ पुलिस वाला था, पुलिस वालों को मारा था. जैसे दूर में मुक्का मारे बंदा मर गया, वो जेल में है. सो व्हेनेवर ए सच टेक प्लेस, बी केयरफुल, you don't create any obstruction, because there's nothing you can do, they will do it in any case. They call police and call you. So जो करना तो there's nothing you can do. Next, acquires possession of, or in any way consumes himself in transporting, removing, depositing, keeping, concealing, supplying or purchasing, or in any manner deals with any goods which he knows or has any goods. There are no services or both, there are only goods. Goods which he knows or has reason to believe are liable to be confiscation under this act or the rules that they are under. Mobile phone, चाइना से इलीगल है, कहते हैं वर्मा साहब को ऑफिस में रख दो, बाद में ले लेंगे उनसे. It's very clear कि Mr. Verma should be arrested. If you are trying to help somebody from taxing, which are liable for confiscation, therefore you are liable. So all those chartered accountants who keep number 2 books of accounts in their office, they commit this offense. Never ever do it. Time will catch up with you soon. तुम्हारा भी सारा रिकॉर्ड उनके पास है. मेरे पास अभी केस है किसी सीए का, मेरा दोस्त नहीं है बट इज ए प्रोफेशनल. मैंने पहले भी डिस्कस किया था. वो लोगों से टैक्स इकट्ठा करता था इन ए सेपरेट टैक्स अकाउंट, बैंक में सेपरेट अकाउंट, और वो टैक्स हो गया 25-30 करोड़ रुपए. किसी सिर्फ फरवरी को नोटिस भेज दी, आओ तो चला गया. क्या जी क्या प्रॉब्लम है? मेरे क्लाइंट का टैक्स है, हमने जमा कराया है. कहता है रिकॉर्ड तो लाओ यार, देखेंगे क्या पे छोड़ देंगे आपको, रिकॉर्ड तो लाओ. जब उसने घर में आके अपना सारा रिकॉर्ड बनाया, देयर वाज अ डिफरेंस ऑफ 2-3 करोड़. व्हाट एवर रीजन, क्या होगा मुझे नहीं पता. देन ही विश शो कर नोटिस केम टू मी. मैं कहा व्हाई डिड यू डू इट? कहता है सर ये करना पड़ता है क्लाइंट के लिए, वरना क्लाइंट भाग जाते हैं. मैं कहा तुमकी प्रॉपर्टी भी खरीद ले. He was paying the stamp duties. All he was doing on his own. उन्होंने क्या किया, जो 4 मेजर कस्टमर थे उनको नोटिस दे, उनके पास जो टैक्स पेमेंट्स हुई थी, जो उनकी एविडेंस आई, जो उसकी किताबों में थी, डिफरेंस ऑफ 30%. दैट इज एक्चुअली ए फैक्ट रिकॉर्डेड. अब they have the power, they can call anybody. Whosoever commit or causes to commit, anybody they can call. तो जो मेरे पास है, मैं ये क्या किया? कहता सर वो इनसे रेंट भी लेते हैं, ये भी लेते हैं, वो भी लेते हैं. So you are keeping a tax collection account. So even if you have to act as a pure agent, you have to take only reimbursement, nothing more than this. If you take anything more than this, you are covered here. The company was not looking into the chalans and the amount which they paid to the chartered accountant. अब 20 साल का क्लाइंट है, क्या देखेगा वो रूटीन में? हो सकता बंदे मिले हो. जे सागर, let me give you the name of the firm, जे सागर एसोसिएट्स. उनके अकाउंटेंट ने इन जेल फॉर लास्ट 6 months. उसने ये टैक्स पेमेंट ले लेके अपने ही नाम से विड्रॉ करके ही डिड स्टॉप ट्रेडिंग.
अपने क्लाइंट को चलान दिए, कौन से दिए? फेक. Obviously, they recovered it after 1.5 years. मेरा अपना कजन अशोक वर्मा एंड कंपनी इज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट. Notice came to us also. How did you audit? We were able to make out some Supreme Court ruling that gave them reply. E&Y was appointed forensic audit. They stayed there for 2 months. My own brother and his sons went many times there to give a test that we were not a party to it. क्या करेंगे आप इसमें? क्लाइंट क्या करेगा? अब वो क्लाइंट फंस गए कि फेक चलान थे. So the whole chain got caught. And this CA is in jail without bail. He will never get bail क्योंकि बहुत serious allegation. 22 करोड़ का, and he confessed. उसने क्राइम ब्रांच को स्टेटमेंट दी. क्या जी मैंने किया, मैंने जो स्टॉक ट्रेडिंग कर दी वो सारे पैसे गुजरात की फर्म लेगी, नुकसान हो गया. So when you are professional doing these kind of job, nothing bad in this, but be careful. That's the only thing to say. Next, receives or is any way concerned with the supply of, receives, the word is or, is in any way concerned with the supply of or in any other manner deals with any supply of services. This deals with only services. When you are dealing with goods, this with or deals only with services which he knows or has reason to believe are in contravention of any provisions of this act or the rules made thereunder. बहुत बड़ा phrase है. He receives himself or is in any way connected with it. Government contracts, works contract services. So all offences are committed under this clause. हाँ बेचेंगे है सब कॉन्ट्रैक्ट मैं ले दूंगा आपको. Now this principal contractor working for an employer, ये भी एक केस है. सीआर बिल्डिंग में है, चल केस पर्सनली पकड़ लिया, बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट है. उन्होंने देखा कि के लेबर के बहुत बड़े बिल है, तो बुला लिया उसको. टैक्स लगा हुआ था, सब कुछ था. पहले उन्होंने इसको बुलाया, इसकी स्टेटमेंट रिकॉर्ड की. फिर जिन्होंने बिल इश्यू किए थे उनको बुला दिया. तो बोला जी मिनिमम वेजेस एक्ट दिखाइए, कौन से नाम पर चढ़ाया आपने. वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट पर काम रजिस्ट्रेशन आपका. वो जो बंदे आए, आई वाज सिटिंग देयर, व्हेन आई वाज शॉक्ड. ये बंदे तो ये काम नहीं कर सकते. All bills were found fake. I told my client please pay. Whether time दे दो, मैं क्या टाइम दे दो, किस्तें नहीं हो सकती इस केस में, but you keep paying, they will not trouble you. He paid 1.7 crores. Whether you pay or you face arrest, this is too much. I told him in their presence, ये बोले वो कहीं मतलब सड़क छाप बंदे उठा के ला गए, ना वो बोल सकते थे ना उनको कुछ पता था. उनको यही नहीं पता था कि बिलों में हमारे साइन है या नहीं, यही नहीं पता था. So when you deal with such cases, when you go for investigation, this is your first job. Charge the client कि sir going through files we will charge you so much. हम चार्ज करते हैं ताकि फाइल पढ़ने के कितने पैसे लेंगे. बाद में बोले केस करना है या नहीं करना. Don't jump. कुछ उसके देख लो, रैंडम में तो देख लो, आपको पता चल जाएगा चोर है या नहीं. लाइक ही राइट से आपको पता होगा क्लाइंट चोर है या नहीं, क्योंकि हमने पैसे लेने हैं, हम उसको छोड़ते नहीं. But then when you read these languages, these are very serious languages. Next, tampers with or destroys any material evidence or documents. वो रेड करके निकले, आपने ऑफिस में आग लगा दी, शॉर्ट सर्किट कर दिया, कंप्यूटर को नीचे फेंक दिया, उसकी हार्ड डिस्क निकाल ली, कुछ भी कर लिया. Unless you prove this was not a mala fide act, you are trapped again as an offense. You have tried. मतलब रेड होते ही आपका सब कुछ आगे लगी वहां. दिल्ली सेल्स एक्ट में होता था रूल 73. उसमें था कि जो एस्टीमान फॉर्म आते थे जिसके ऊपर आपके एग्जेम्पशन मिलती थी, अगर उनको आग लग जाए तो सारी एग्जेम्पशन मिलती थी. हमारे कमिश्नर थे मिस्टर बीपी मिश्रा, बड़े बड़े अच्छे दोस्त थे, वेरी गुड मैन, वेरी ऑनेस्ट मैन. उनके पास मैंने एक केस किया. आई टेल यू एग्जैक्टली व्हाट ही डिड. ये फाइल थी ऐसे मेरे आगे फेंक दी, कहता और मैं डेड बॉडी
किसी भी कीमत पे केस नहीं करो। 7(3) फ्रॉड। कहता साले जब एस्टिव वन खोल तो आग लगा देते हैं। कहते ये तो पता कहाँ से शेयर की थी, कुछ तो दो, किसको किससे लेने थे अपनी एस्टिव वन फॉर्म। कहते इन्फॉर्मेशन देते कि पता नहीं कहाँ किसको सेल की थी, बड़ी सारी किताबें चल गई। कहते सीए के पास बैलेंस शीट होगी, कहीं तो कुछ होगा तुम्हारे पास, एविडेंस तो लाओ। उसमें तो कंडीशन था, वो भी कंडीशन थी उसमें। क्या He has to prove कि वो कहाँ से परचेज किया है। He had to provide the list of the dealer. FIR सब कुछ हो गया। कहते कुछ तो लाओ रिकॉर्ड पे। वो तो दिया ही नहीं होगा। उन्होंने किसी को कमीशन नहीं दी, साफ केस डिस्कस किए। 7(3) फ्रॉड। इसी तरह अगर आपके वहाँ रेड हुई है, सडनली आप कहते हो आग लग गई, रात को हम तो ठीक करके गए थे, शॉर्ट सर्किट हो गया। शॉर्ट सर्किट टुडे साइंस कैन मेक आउट वेदर देयर वाज शॉर्ट सर्किट और नॉट। टेक्नोलॉजी हैज बीन अपग्रेडेड। They can easily tell you was there a short circuit in your premises or not. मतलब खाली आपका कंप्यूटर ही जला, बाकी कुछ नहीं जला, पूरे घर में आग नहीं लगे आपके? नहीं सर, वो उसी स्विच पे आग लगी थी। हम लोग बोलते हैं नेक्स्ट जिसपे कंप्यूटर हैं, जिसपे कंप्यूटर लगा। fails to supply any information which is required to supply, that is suppression of fact. We know the meaning of suppression of fact. Section 74, that is written for the purposes of this act. Go back to 74, that is for the purpose of this act. क्या लिखा है? Yes, expression is for the purpose of this act. So it's the same language here. This is also an offence. Attempts to commit or abets the commission of any of the offences mentioned in class A to K. आप उसमें भागीदार हो कि आपने लोगों को उकसाया कि ये ऑफेंस कमिट करो। अब इसमें कुछ नहीं है, रिटेन द बेनिफिट और क्या था, कुछ नहीं लिखा। So if you are charged with an offense in a particular subclause, only ingredients of that subclause have to be satisfied. When I say me too argument, in criminal jurisprudence, the law is clear. You have to reply what you are charged with. अब हम क्या लिखते हैं, सुप्रीम कोर्ट इंटेंशन टू एवेड टैक्स नहीं था, इट डजंट रिक्वायर। जज विल से कहाँ लिखा है क्या आपका इंटेंशन टू एवेड टैक्स था? तो कहते हैं यू कमिट्स और अवेट्स टू कमिट। यहाँ पे एविडेंस है, आपने करवाया है। सो दिस लीगल जार्गन वी राइट 25-30 पे लिखते हैं हम सुप्रीम कोर्ट को कोट करके विच हैव नो कनेक्शन विद द ऑफेंस यू आर चार्ज्ड विद। दैट्स व्हाई कॉल व्हेन वी टेक ए मी टू आर्गुमेंट इन दिस काइंड ऑफ लॉज यू फेल मिserably. Notwithstanding, there is a Supreme Court ruling, if there is a stake condition of 10%, whatever the demand, if a guy deposits 10%, bail him out. Why there is no bail? 3 ruling है Supreme Court, और सीनियर एक मुकुट रोड के नहीं की हुई, 10% जमा कराया हो गया, इस सीए को bail क्यों नहीं मिली? He was willing to deposit 10%, because those were contextual judgments. They did not lay down any rule of law. Under those circumstances, they say, okay, deposit 10%, you will be released on bail. To the particular facts and circumstances. So whenever you apply a ratio of a judgment, you have to see whether this was based on a fact or based on a law. Article 141 gets invoked only when Supreme Court declares a law. But when Supreme Court just gives a release based on facts, then this is not a law. They are not interpreting any law. They simply say, okay, ये fact है, ये करने को तैयार है, हम इसको bail दे देते हैं. Bail is in any case a matter of discretion. Now, let's go further. Shall be punishable. So, अगर आपने 8-12 तक कोई offense commit किए हैं, whosoever आपने खुद किए हैं, or you have caused somebody else to commit offenses, in the opening language of subsection 1, then in cases where the amount of tax evaded or the amount of input tax credit wrongly availed or utilized word is for the first time, it doesn't exist in any of the other offenses. Now they say availed or utilized or the amount of refund wrongly taken exceeds 500 lakh rupees with imprisonment for a term which may extend to 5 years and fine. And these are only A to D. ये जो लैंग्वेज यूज है सिर्फ A to D में है, A to D, first 4 offenses of subsection 1, A, B, C, D. सर A to K लिखा हुआ है।
इसमें कहाँ लिखा है? नहीं वो आई नहीं वो प्रेसिडेंशियल चार्ज वो आई में लिखा है, वो अलग चीज है. In case where the amount of tax evaded or the amount of input tax credit wrongly availed or utilized, there is no and here. And is only for the purpose of subsection 3 of section 50. It has no other connection. Only for interest they amended retrospectively. Or utilized or the amount of refund wrongly taken exceeds 5 crores with imprisonment for a term which may extend to 5 years and with fine. Surplus 2. In cases where the amount of tax evaded etc. does not be 500, imprisonment term which may extend to 3 years and with fine. In case of any other offence where the amount of tax evaded so and so exceeds 100 lakh rupees for a term which may extend to 1 year and with fine. In cases where he commits or abets the commission of an offence in clause F, G or J, he shall be punishable with one term which may extend to 6 months or fine. We stop here, take T and then immediately go to section 69 to understand what this means. I agree that